Hey guys, welcome back to my channel. So today we'll talk about this fertilization. Okay, so what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gametes to produce a new child. Means in fertilization, the male and female gametes, means the sperm and the ovum, they fuse to produce a new child. And this process begins with meeting of sperm and egg cells, and this fertilization process ends with the development of single-celled creature. It means in the fertilization process, there will be meeting of sperm cells and the egg cells, and this will end with the development of a single-celled creature, which is known as zygote. Generally, the fertilization occurs in the ampullary region of the fallopian tube. Here I have shown through a rough diagram. See, this is the, we considered it uterus, and this is the fallopian tube. So here this is the ampullary region, ampulla part of the fallopian tube. Here generally the fertilization occurs. So the first step of fertilization is approximation of the gametes. What happens in approximation of gametes? The fimbrial end of fallopian tube that captures the ovum right after the ovulation, and this is aided by the muscular and the ciliary movements. The ciliary and muscular movement which are present in the fallopian tube, that helps to capture the ovum right after the ovulation. Now the ovum is transported to the ampullary area of fallopian tube. This ovum is viable for fertilization for 12 to 24 hours. 12 से 24 घंटे तक ही सिर्फ वो ओवम वहाँ पे वाइबल रहेगा, available for the fertilization. Whereas the lifespan of sperm is 48 hours to 72 hours. Sperm has long lifespan, whereas the ovum has just half or the short lifespan. Now, during single ejaculation, many millions of sperms are released into the vagina. However, only thousands of the capacitated sperms make it into the uterine tube. It means during ejaculation, millions of sperm will be released into the vagina, but only thousands will be able to reach the uterine tube, and just 300 to 500 ultimately reach the ovum. So the first step is approximation of the gametes. After this comes contact and the fusion of the gametes. Now how the ovum and the sperm, they get fuse. When the gametes make contact and fuse, an enzyme which is known as hyaluronidase, this enzyme is released from the acrosomal cap of the sperm. Now, what is the acrosomal cap, where it is present? See, this is the diagram of sperm. This is rough diagram of sperm. So here on the tip, this is the acrosome. Here is the nucleus and here is the acrosome. So from this acrosome, the enzyme hyaluronidase is released. And this chemically break down the cells of corona radiata completely. This enzyme will help to break down the corona radiata cells. Okay. Now see, this is the ovum. Okay. Now this outer layer, this is the corona radiata layer, and this enzyme hyaluronidase of sperm, that will help to break down this layer and go inside. Now the zona pellucida is penetrated with
aid of hyaluronidase released, and multiple sperm cells may succeed in breaking zona pellucida. First they will pierce this corona radiata layer, then some of them will go inside. They will succeed in breaking this layer, zona pellucida. They will break this layer and come inside. Among numerous sperms, only one will have contact with the oolemma. Now, what is oolemma? The inside layer. Means it's a specialized plasma membrane that regulates the entry of sperms. So many will cross corona radiata, then many will succeed in crossing zona pellucida, then only among the numerous sperms only one will make contact with the oolemma. Okay, and the other sperms are prevented from penetrating due to zonal reaction. The other sperms, they now cannot penetrate inside due to zonal reaction. What is zonal reaction? This is a biochemical process where the outer layer of egg means the zona pellucida, that gets hardened, and if that layer gets hardened, it prevents entry of the further any of the sperms. So this zonal reaction helps to prevent entry of multiple sperms. Now the oocyte quickly completes its second meiotic division, and that results in two cells, and these two cells have haploid chromosome set. The first cell, which is larger one, that becomes female pronucleus, while the smaller one becomes the second polar body, and this second polar body is moved into the perivitelline space. Now the head and tail of the sperm, they enter the oocyte cytoplasm, and they leave behind their plasma membrane on the oocyte surface. Means when the sperm's head and tail that enter the oocyte cytoplasm, it leaves behind plasma membrane on the oocyte surface. The head and neck of sperm, it will form male pronucleus, and it will be carrying haploid chromosome set. Now, the male and female pronuclei, they both will merge at the center, and they will restore the species-specific diploid chromosome number, because they both were the haploid. So, they will merge and they will restore the diploid chromosome number. Now this zygote which has formed, it now contains the genetic material from both the parents. So, in Morula, following formation of zygote, the nucleus undergoes mitotic division. जाइगोट फॉर्म हो गया. जाइगोट फॉर्म होने के बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन उसमें होता रहता है, और एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्रिएशन ऑफ 2 ब्लास्टोमियर्स हो जाती है. 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं न्यूक्लियर में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद. ये जो 2 सेल स्टेज होती है, दिस इज अचीव्ड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 30 घंटे के बाद में 2 सेल स्टेज अचीव हो जाती है, जिसमें कि हर एक ब्लास्टोमियर में इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और सेम क्रोमोसोम काउंट पाया जाता है. ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ये डिवाइड होते रहते हैं. ये 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से इनमें डिवाइडिंग होती रहती है until they form a dense cluster known as morula. ये तब तक डिवाइड होते रहेंगे जब तक फिर ये एक डेंस क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको मोरूला बोलते हैं. ये रिजेंबल करता है मलबेरी स्ट्रक्चर से. मलबेरी स्ट्रक्चर एक गुच्छा जैसा, मलबेरी जो फ्रूट होता है वैसा ये बन जाता है क्लस्टर फॉर्म में. जो मोरूला स्टेज होता है वो यूट्राइन ट्यूब में अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तक मोरूला वहां पे स्टे करेगा.
4th डे पे जो मोरूला होता है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है. 3 डेज तक अप्रोक्सीमेटली यूट्राइन ट्यूब में रहेगा, फिर यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा, और जब वो एंटर करता है जनरली 16 to 64 सेल स्टेज पे वो पहुंचा हुआ होता है, और वो पास करता है थ्रू नैरो यूट्राइन ओस्टियम. इस तरीके से वो यूट्राइन कैविटी में रीच करेगा. जो मोरूला का ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रेजुअल है, स्लो है, लगातार चलता रहता है, और ये किस तरीके से रेगुलेट होता है? बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस. और जो सीलिया पाए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उनमें मूवमेंट्स होती रहती हैं, जिसके एज अ रिजल्ट ये मोरूला ट्रांसपोर्ट होता रहता है. नाउ आई विल शो यू वन डायग्राम. यू कैन सी हियर जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बन गया, देन 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और ये मोरूला फॉर्म हो गया, मलबेरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और मोरूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है. कैसे होता है ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म, अभी देखते हैं हम. So, as the morula floats freely in the uterine cavity on 5th and 6th days, it is enveloped by thin mucus layer. जो मोरूला है यूट्राइन कैविटी में 5th-6 डेज पे फ्री फ्लोट कर रहा होता है, और उसके चारों तरफ एक थिन म्यूकस लेयर उसको एनवेलप करके रखती है. जो जोना पैल्यूसिडा होता है उसकी कैनालिकुलीज के थ्रू फ्लूइड मूव करने लगता है, जिस वजह से जो मोरूला की सेल्स होती हैं सेपरेट होने लगती हैं, और इस स्टेज पे हम इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. यू कैन सी हेयर इन दिस डायग्राम वी हैव शोन द ब्लास्टोसिस्ट. सो सेल्स जो हैं वो फ्लूइड की वजह से सेपरेट हो गई, उन्होंने एक आउटर लेयर बना दी, और एक तरफ जो सेल्स हैं एक्यूमुलेट हो गई, इनर सेल मास बन गया, और बीच में एक ब्लास्टोसिस्ट वाली कैविटी फॉर्म हो गई. जो जोना पैल्यूसिडा लेयर है दैट कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग, वो थिन हो जाती है और इवेंचुअली डिसॉल्व हो जाती है. और इस जोना पैल्यूसिडा के ब्रेक डाउन को और एम्ब्रियो रिलीज को हम जोना हैचिंग स्टेज कहते हैं. मोरूला में जो आउटर सेल्स होती हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफेक्टोडर्म, वाइल जो इनर सेल्स होती हैं वो इनर सेल मास बना देती हैं. एक आउटर लेयर बन जाती है विच यू कैन सी हेयर ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल्स मास है वो एक्यूमुलेट होके एक तरफ पे इनर सेल्स जो है वो इनर सेल मास बना देती हैं. द ट्रोफेक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द कोरियन फर्दर, एंड इनर सेल मास गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो. जो ट्रोफेक्टोडर्म है उससे कोरियन डेवलप होगा आगे, और जो इनर सेल मास है उससे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. See you in my next video, and you can also suggest me the topic you want to study in the comment box. Thank you so much. Goodbye.